let's jump on the topic itself Yeah, for today, gut sure. science and how Ayurveda looks into your gut. Hmm. Okay, so Yeah. coming back to how moon works, I'll surely tell you this, but no, before that, we will understand why your gut health is that much important. Okay, first is we feel like gut is just for your digestion, for your absorption, absorption of nutrients, but your stress, your other metabolism, your sleep patterns, everything is dependent on your gut. Okay, so I'll you name the disease and I'll tell you how it is related to your gut. So any sort of metabolic issues like thyroid is there, your diabetes is there, everything is linked to your gut. Also, your gut is, it's a powerhouse of hormones. So 80% of your hormonal release is from your gut. Your gut is also called as second brain, wherein your neurons are much more than your brain inside your gut. So it is very much important. If your gut is it's probably, if it is functioning better, your all organs will function better. If it is upset, you have faced many issues, wherein you have stress because of upset stomach, you have disturbed sleep because of that. So it is very much important, guys. And only, taking a PPI, simple pantoprazole, will not solve this issue permanently, is what I feel. That's why we Hmm. have come up with Mool. Mool, I'll surely tell you a brief history about Mool. Mool is, your gut is the mool, the root of the whole body. So that's one perspective. Other perspective is we are not working on the superficial problems. We are Yes. going deeper. We are going deep. So fixing your root is very much important. Acidity is a superficial problem. Uh, Going into deep, why the acid is produced more, from where the acid production is there. So that is important, fixing your root. That's why, the second perspective of Mool health is what we are defining, and we have started with that. Okay, coming back to Mool health, these we work from in the perspective. I think Prathana, that is the first slide. Can you go back? Okay, so how Mool works? Three main domains are there. First is your gut test. So people come to me asking, lab test है क्या मैडम, या कोई stool test है क्या? Hmm. नहीं, gut test is a design test in which we have worked under acidity, gas, your bloating, everything. And whenever you tap on the bars, it is not a system generated test. It is just the test to identify that what are the root causes. So mapping of root cause will be done by your gut test. A doctor sits, a doctor examines everything, examines your gut type, prakruti based, how your gut is reacting, and then we give a personalized plan. Personalized plan always means your three things. So I usually tell my patients that three main pillars are there. First is medicine, which will do their job. Second is your diet, which is the most important thing. Third is your lifestyle. So I'll literally give 60% to your diet and lifestyle. मैं literally patients को बोलती हूँ कि आपको diet lifestyle सुधारने के लिए नहीं हो रहा है, don't take medicines. That's simple it is. So personalized means a 25-year-old will have a different diet plan, right? And a 55-year-old will have a डिफरेंट डाइट प्लान. जो प्रोटीन्स हम 25th ईयर पे पचा रहे थे, वो 55th ईयर पे नहीं पचा पाएंगे. ओके, सो द everything changes. Okay, so that's how Mool works. And also that's how a personalized diet plan, personalized kit should work. So it is based on your Ayurvedic supplements with some probiotics. We also have range of probiotics. Coming back to your diet and lifestyle, which is specific to your disease. Okay, we can move forward. Okay, coming back to your body type and your gut type, that is much more important. Prathana has told you earlier that kaisa, having ball of sprout or chana dal, how it is related.
how it is related based on your age, based on your gut type, and based on what time of the day do you have food. Okay, so Ayurveda differs in this. We see first the gut type. I have seen in my clinical practice, single gut type won't come. Like Vataj, Pittaj, and Kafaj. Three doshas are there. We have combinations. Always, I end up saying that this is a combination of Vata, Pitta, and Kapha. So Ayurveda differs in this. I guess doctor might have some network issue, but she will be joining us soon. Don't worry, guys. हमारे साथ डॉक्टर है. Uh, doctor, are you there with us? ओके, डोंट वरी गाइस, आई गेस डॉक्टर को कोई नेटवर्क इशू रहा होगा. डोंट वरी, मैं आप सभी हमारे साथ जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सके. तो जैसे हमारे साथ अजय जी है, भूमि जी है, चंद्रकांत जी है, तो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चंस है, डॉक्टर शाहिद, गीतांजलि जी, गोकुल जी, आपके जो भी क्वेश्चंस है, ये सर आपने एक बार क्वेश्चंस डाल दिया है, विल हेल्प यू आउट. बस मैं बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि जब डॉक्टर अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करे उसके बाद हम आपके क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में आप सभी के सवालों के जवाब दे सके, ताकि आपको एक क्लियर क्या बोल सके गाइडेंस मिल सके आपकी मूल हेल्थ की जर्नी के लिए. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए. आप सभी को हमने चैट बॉक्स का एक्सेस दिया है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. जब तक डॉक्टर अपना नेटवर्क इशू सॉल्व कर रहे हैं, सो आई माइट बी प्रिटी श्योर कि आप सभी ने अपना गट टेस्ट दिया है. तो कैन आई गेट अ रिएक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस कि आपने गट टेस्ट दिया है? आप सिंपली मुझे रिएक्ट करके बता सकते हो. यस, परफेक्ट. तो आपने जब गट टेस्ट दिया उसके बाद आपको बहुत सारी नई चीजें पता चली होगी, क्योंकि फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आल्सो आयुर्वेदा इज समथिंग जो हमें एकदम बेसिक पता होता है कि ठीक है आयुर्वेदा है जो हमें मदद करता है, बट मूल हेल्थ आपको आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के थ्रू हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. सो इज देयर दिस अ न्यू या सो हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं. सो या डॉक्टर, आई गेस देयर वाज सम नेटवर्क इशू. Yeah, I really apologize for that. या I had some. Okay. So coming back to the the gut type and the time of the day you are consuming food. So for an example, if we am I audible, Prathana? yes doctor, you are audible. Yeah. Okay. So coming back to the type, so if a Vata's dominant person is consuming dals or proteins or raw salads in the evening zone, evening hours, where there is dominance of Vayu, so there will be increased gas, there will be bloating, there will also be sometimes constipation with typically hard and dry stools that will be there. So that is a difference. Wherein a Pittaj person, if he is eating bowl of sprouts in the evening time, he will not face such issues because his digestion is proper, and also his metabolism is good. But also he may suffer with acid reflux.
colons, because more acid is there. So you have lining, and your acid hits to the lining wherein the disruption is there. That's why chances of ulcers, chances of having inflammatory changes inside your lining will be there with the dominant person. Okay. Again, as we have already discussed about the age type, how it differs. So what we have in 20s, what we have in 40s, and what we have in 60s differs. Okay, so based on that, based on these three things, we are planning a kit and planning the personalized plan. Okay, next slide. Yeah, so it is basically very simple. Also, the question here is very much detailed, in which we ask everything: when your acidity is increasing, when you have gas. So, for an example, evening hours, if a patient is feeling gas, that is completely normal, because evening hours are there of Vayu predominance, right? So, we don't have to much stress, we don't have to much pressurize him to go for the treatment. We can also plan some dietary changes, we can plan some simple medicines, and we can work on that. So based on the gut test, we know this, we know your root causes, why this is happening, and how we have to solve the root cause. Okay, so for an example, if I talk about gas, giving a gas pill will surely work. I'm very much fond of allopathy, but it is just a quick relief, quick fix. We are not going to the permanent healing wherein we will not have gas. If your gut is dependent on gas pill, it is very much so. And a time will come whenever you don't have any pills, or you don't want to take any, but your gut is now dependent on it, because you have taken it for 2 to 3 years, which is a very which is very true according to your you are okay in that. But we are not going to the roots wherein why the gas is coming. Why it is coming is because we are having food, it is getting digested properly, but in a normal person, 60 to 70% of your food is getting digested, but that 30 to 40% which lazily sticks and stays inside your stomach, that will give you. हम जैसे सिंपल बाहर एक बासी खाना रखते हैं, जो ब्रेड रखते हैं, नेक्स्ट डे उसको फर्मेंटेशन होता है, उसमें बैक्टीरियाज लगते हैं. No, that type of same fermentation will be there inside your gut and colons. So I'll talk about your stomach as well as your colons, because your colons are it's a tube-like structure which is moving, and whenever it is not moving with a pressure, you will get constipation. So only constipation we should not be working on. We should be working on the gut motility, because the rhythm is not proper. So let's not diagnose a disease. Let's go on the root cause from where it is coming. Okay, so real root causes. Weak digestion is the first real root cause by what we have to look upon. Agni, your Agni is the main digestive strength, wherein if you have a proper Agni, you will have a proper metabolism, you will have proper assimilation of food, proper digestion, and whenever your absorption is good, your stool formation and evacuation will itself it will be eventually better. Okay, so Agni plays a very important role. Second is enzyme deficiency. I'll surely talk about it, because we have good amount of enzymes, but sometimes the enzymes are not channelized to your food. Having any liver pathologies like fatty liver or cirrhosis of liver, in which liver is storing enzymes properly, but it is the enzyme release is a problem, and your food bolus is not having proper enzyme to digest. Okay, so that is one thing which we have to work on. Third important thing is gut bacteria for sure, because your colons will be will be in a symbiosis wherein bad bacteria and good bacteria are there, and they are working wonderfully with each other. But sometimes because our impure whatever we have, we know that how much pure things we have these days, and regarding your
your imbalances, what happens is bad bacteria's amount will increase and it will overpower the amount of good bacteria. So bacteria increases. So that is not helpful, because then whenever your good bacteria is triggered, you will not have proper absorption. Also, I have seen cases in which people are having loose stools, or maybe unformed stools. This is very much common, or sticky stools. Why? Because nutrients are not getting absorbed properly. Because good bacteria are not there. So that's why we also have range of probiotics in which, because Ayurveda is not supplementing any bacterial load, so we work with probiotics as well as Ayurveda. That is it. Weak gut lining. That is surely, it is one of the major problems in young people. Also, I have seen 20s में लोग आते हैं, जब भी होता है, I feel pain. Also, there is a typical symptom wherein आप वॉशरूम होके आते हो and you feel better. That is one of the symptoms जहाँ पे हम इसको IBS diagnose करते हैं. IBS में what is there? Irregularity. So एक दिन ऐसा हो रहा है कि आप 2-3 बार जा रहे हो, एक दिन ऐसा हो रहा है कि आप जा ही नहीं पा रहे हो. So that pattern IBS follows. Also, there is a miscommunication in between your brain and gut. Let's come to the fifth topic: stress. Your brain and gut is having excess. They are communicating wonderfully with each other, but sometimes what happens is whenever your brain is not working properly, it will it is stress back to your gut health. Why? Because your brain is the regulator and it is not regulating your gut properly. So that is there. Also, there is a second chance wherein patients are perfectly fine, they don't have any stress, एकदम मजे में होते हैं वो, but गट का इशू है ना मैडम, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है. वेरी वेरी टिपिकल सिम्टम वेरिन लोगों को 20-25 साल से सेम चीजें हैं, मैडम पेट साफ ही नहीं होता है. साफ होगा तो मैं फ्रेश रहूंगा. Simple. So this is connected, and whenever your gut is upset, gut will start giving negative signals to your brain, because neurons hai wahan pe, that these are transmitters. So it will surely impact on your brain. So working on not just on your maybe that stress point will come into your lifestyle, how we have to manage this. I know it's a very easy thing for me to say, and jinko hota hai, they will be knowing it more better. But yahan pe stress management also we are taking care of, because we also have a wonderful herbal formulation called as Stressless, jo sleeping pill nahi hai. This is an Ayurvedic herbal supplement जो आपके brain and gut के miscommunication पे काम करता है. So I usually tell my patients कि brain को काम रखेंगे, sleep अपने आप improve हो जाएगा. Okay, and also बहुत बार हमने customers को कुछ नहीं देके सिर्फ gut issues पे target किया है, and also उन्होंने sleep improve किया है. Also I have seen such cases, and it is a very happy satisfactory thing जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता है ना at that time. So yeah, so these are the root causes. We can go on the next slide. Okay, so coming back to that satisfactory feeling, what healing looks like, I'll tell you. We usually give timeline of 3 to 6 months. So अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है with acidity, एक ही हफ्ते से है, it's not a chronic thing, acute है, but ये जो imbalances create होते हैं ना, एक हफ्ता is the symptomatic thing जो आपको मिलता है. इसके पहले आप 3 महीने से जो भी कुछ कर रहे हो ना, ये सब एक हफ्ते में आया है, acidity. So that way we have to work. So a patient coming with 20 years of acidity, a patient coming with 1 week of acidity, we surely give a timeline of 3 to 6 months, because this is clinically proven. On the first month, we have symptomatic relief, जहाँ पे symptoms को कम किया जाता है. Second stage में we maintain your agni, maintaining your digestive strength, so that ये disease फिर से ना आए. Okay, and from 3rd month onwards we go into that healing phase, wherein आपके gut को इतना heal करके रखना है. So the motive is to keep you without any medicines, with a good diet and lifestyle. So that is the actual plan how we work on.
Okay. So eating without fear, I have seen the patients, madam abhi kha sakta ho kya? Abhi non-veg खा सकते हैं क्या? So we are very happy to tell them, पहले 1.5 महीना 2 महीना कुछ मत पूछो, 3 महीने के बाद we can surely start with a very good diet, including your non-veg food and balanced diet we can plan. Also ऐसा भी नहीं है कि you know after 6 months मुझे पूछो कि सब कुछ आप ले सकते हो क्या? नहीं, based on your gut type, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, we recommend that so that you know we will not be needing medicines anymore अगर आप डाइट ही अच्छा फॉलो करें आगे तो. So that's the whole plan. Okay. Stable energy, yeah, stable energy is also one of the factors जहाँ पे you know whenever your gut is regularized properly, you will have a good energy impact. So you will not be like एक दिन complete you are hitting the gym and next day you are on bed, you know, simply lazy. It should not be like that. Regular, मैं वही बोल रही हूँ, workouts important नहीं है, gym important नहीं है, but regular walking, regular post meal walks, regular yogas and some breathing exercises are very much important. Yeah. Okay, so coming back to the you know main thing, fix the root, not the symptoms. Fix the root always. You know, if a patient is coming with, we have two things. Okay, so I'll give you a short example how acidity differs. A patient is just having burning is also considered as acidity. A patient is having acid reflux and mild headache is also called as acidity. Okay, so why it is happening? Maybe in the first case, the patient is having irregular meal timings. Maybe he is eating late night. Wherever your digestion is not there, it sleeps. It's a sleeping time. आप 2 बजे खाना खा रहे हो रात को because of your working shift. So that is not going to help your gut. That's my point. So fixing your root is very much important in these cases. We also have range of products in which acidity पे 2 चीजें है, but then seeing कि acidity कैसा increase हो रहा है, then we plan your kit accordingly. कि क्या you know क्या suitable रहेगा, क्या जाना चाहिए, that way. Yeah. And also personalized plan है with the range of Ayurveda products and probiotics and diet and other things. One of the most important thing is help of your gut expert. This is our medical team who all are dedicatedly working on, because हमेशा क्या होता है ना, हम दवाई देते हैं and हम छोड़ देते हैं. दवाई देके एक हफ्ते में उनका फॉलो अप लेना is very much important, because medicine dena is first part, you taking the medicine is second part, but how your body is reacting with the medicine is the third part. So we have to you know keep an eye on it, how it is working, and then we also have other solutions. So gradually हम चीजों को देखते हैं and we comment on it. Yes, Also we also have doctors support, और तो ऐसा कुछ है तो surely a doctor will always be there for you. Yes, definitely, doctor. So, as you explained that it's not always about the root. It depends upon the root cause. That's why personalization matters. So that's why how mold really help. Yeah. So thank you, doctor, for explaining everything in detail. And I hope हमारे जो सारे customers जुड़े हो उनको एक idea मिल चुका है कि क्यों हम इतने deeply सब कुछ पूछते हैं gut test में, how ये really help करता है. आयुर्वेदिक का वो basic कैसे ये सारी चीजें cause करता है. So thank you, doctor, for explaining that. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए. एंड मैं हमारे सारे कस्टमर्स जो है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आपके जो भी क्वेश्चंस है वो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड करे. डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चंस, वी आर ऑलरेडी हियर टू हेल्प यू आउट. ओके, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सपोर्ट मटेरियल, हियर नॉट मेंशन हिज नेम. उन्होंने बताया कि उनके देयर इज अ बिग इशू, उनका स्टमक यूजुअली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम से सफर कर रहा है इरिटेशन एंड हैव इनकंसिस्टेंट स्टूल, लाइक कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी उनको डायरिया हो जाता है. एंड यूजुअली मोस्ट डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम इज द एसिड रिफ्लेक्स. उनको GERD है एंड ही इज 17 years old अभी. सो how can we really help him with all the issues, like कभी कभी उनको bloating भी हो जाती है, गैस भी हो जाती है, तो everything is there, तो how we can help him? See, first his age is 17, right? Yes.
20. ओके, सो इतने यंग एज में ये चीज होना, दैट इज वेयर इट इंडिकेट्स कि कहीं पे इम्बैलेंस है, एंड he is maybe having, you know, meal timings are not regular, or maybe he's not following a good diet. We have to go on the root cause from where it is coming first. Second is, you know, we work on your digestive strength here. So जब भी digestion ठीक होगा, I'm coming back to the same point, whenever digestion ठीक होगा, आपका stool का बनना and stool का pass होना eventually better होगा. So ये second point है, working on your digestive strength. Third and fourth important point is, I'll combine these 2 points. One is your gut sensitivity, how your gut is reacting to different materials. So for an example, if you have spicy food से diarrhea हो रहा है, या कोई और reason है diarrhea होने का, we have to also work on this. Fourth important cheese is gut ka movements, the motility. Your gut is having some movements, वो rhythm से है, and you have a natural motion. So वहाँ पे work. So 4 points from my side we will be working. Second thing is your Agni, your digestive strength. We have to strengthen that, because acid reflux हो रहा है, that itself indicates कि somewhere he is having pitta imbalance. Whenever a hyperacid state comes, you will surely have diarrhea, because hyperacidity will be, from acid reflux from above, from below. Yeah. Everything. So digestive canal is having, more of acid. So that's why we have to work on that. Third is your gut sensitivity, how your lining is working, so that whenever we strengthen your lining, you will have a good motion. You will not face diarrhea. And fourth important point is your gut rhythm. We have to work so that you will not have, multiple times a day आप नहीं जा रहे हो, and एक ही single बार जा रहे हो with a good pressure. That's an ideal way how to manage this. And doctor, you have We also should mentioned, also, work on the triggers from where. yeah, so you have mentioned कि उनका पित्त kind of है body में, and उनका body usually warmer side पे रहता है. So that's where I told you na, there will be some kind of pitta imbalance will surely be there, jahan pe we have to work. Not only the pitta is not related to the acid reflux which we have, it is also related to your digestive enzymes. I just want to highlight this point. We are not controlling acid, because controlling acid will give you bloating. Digestion अच्छा नहीं होगा अगर हम acid को control करें. Acid को हमें channelize करना है to the food so that पचन अच्छा हो, bloating ना हो, toilet अच्छे से बने and toilet अच्छे से pass हो. That is the root cause. So yeah. Yes, definitely. Thank you, doctor. So Saurabh ji, as I can see you have mentioned, don't worry sir, हम आपको definitely मदद करेंगे. बस आपको consistently use करना पड़ेगा, and you will see beautiful results. As doctor ने बताया, supplements तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन आपके साथ आपके lifestyle diet पे भी ध्यान देना पड़ेगा, and you will see beautiful results. So moving forward, हमारा अगला question is from चंद्रकांत जी. He have said जब भी वो प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनकी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन में क्रॉनिक पेन जैसा होने लगता है उनको. ओके, ओनली विद प्रोटीन्स या और कोई स्पेसिफिक मेंशन किया उन्होंने? नहीं, he has just said कि if I eat protein products, तो उनकी बॉडी में ये सारी चीजें होती है. Okay, so I can relate this. Protein intake proteins are very heavy molecules to break down. Okay, so whenever your gut strength is not, your digestive strength is not proper, your body is not able to digest that much amount of proteins. Also, at what time do you have proteins is also a thing to work on. आप अगर सुबह या मिड डे मील पे, जैसे 11:30 to 12 या 12:30 तक जब आपका डाइजेशन अच्छा है, तब आप प्रोटीन खा रहे हो, तो आपको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी योर गट इज वेरी मच सेंसिटिव टू प्रोटीन्स,
एंड आपको वो अमाउंट थोड़ा सा कम करना चाहिए. ऑल्सो इचिंग आई श्योरली कमेंट ऑन. ये इचिंग क्यों होता है? बिकॉज वी से इन आयुर्वेदा कि आप जब भी कुछ चीजें खाते हो, कुछ पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड रहता है. ये अनडाइजेस्टेड पार्ट इज नथिंग बट टॉक्सिन. ये टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जाते हैं. सो व्हेनेवर वो गट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं है, आपके ब्लड में चीजें जाएंगी एंड वो ब्लड में जो दोष जाता है दैट विल इम्पैक्ट ऑन योर स्किन हेल्थ. That's why modern pathy भी बोलता है gut issues will surely have an impact on skin. Same way as Ayurveda says कि आपका whenever your gut is not working properly, you will have some issues with the skin because your pitta and your rakta, the blood, is very much connected. That's why. So you will have itching. Also, we have to see other parameters. So better है कि at what time it is increasing and why it is increasing. We have to study the pattern and then look into the picture. Okay. Okay. Thank you, doctor. Moving forward, हमारा अगला question is from Nirmala जी. She has mentioned 40 years old, उनको 2021 में H. pylori का infection हुआ था. 14 days के लिए उनकी medicine ली थी, but उनको GERD है, bloating है और 1 महीने में होता रहता है. उनको migraine का भी issue है, headaches होता है. Sometimes it get worse, getting non-stop vomiting. In that case, I used to take injection. It happens 10 times. Please, आप कैसे guide कर सकते हो? Like how Mool will help her? See, first of all, H. pylori infection is very much common. I'm glad that she is asking this question. H. pylori, whenever if a person is completely normal, symptomless है, फिर भी हम चेक करेंगे. For an example, अगर मैं भी चेक करूंगी तो maybe H. pylori positive आ जाए. इतना common है without any symptoms. Okay, so first thing is whenever bacterial infection or any sort of infection comes ना, हम उसके लिए antibiotics लेते हैं, which is a very very true. We have to take that. बट ये क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ये हमारे गुड बैक्टीरियाज को भी फ्लश आउट करता है. सो आपका डाइजेशन वैसे हैम्पर करेगा बिकॉज यू डोंट हैव हेल्दी बैक्टीरियल लोड विच इज गोइंग टू एब्जॉर्ब, विच इज गोइंग टू डाइजेस्ट योर फूड. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज H. pylori. Ayurveda says that whenever आपका body is suffering from some infection, it will surely give some inflammatory changes. So inflammation, every sign of inflammation. So there will be redness, there will be, there will be scars, there will be ulceration inside stomach, which comes in the later phase of H. pylori infection. So ये ulcers पे काम करना बिल्कुल जरूरी है. Also जब भी आपका एसिड प्रोडक्शन होता है, ये एसिड ऐसी जगह टकराता है जहाँ पे देयर इज अ वीक लाइनिंग. सो ये एसिड को कंट्रोल, माय पॉइंट इज कि एसिड को कंट्रोल करना इज शुड नॉट बी द सॉल्यूशन. अगर एसिड को कंट्रोल करेंगे तो पचन अच्छे से नहीं होगा. वी हैव टू स्ट्रेंथन द लाइनिंग. ये लाइनिंग जो है ना, उसको आप मजबूत बनाओ, उसको आप बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बनाओ, ताकि आगे जाके फिर से अगर अटैक हो गया तो योर immune system, your mucosal lining, your mucosal barrier is very much stronger to have an back attack. So वो नहीं होगा. That is. And also जब भी after post H. pylori infection हमें digestive complaints commonly देखने को मिलते हैं. How Mool should be working on it is seeing her case, कब ये हुआ है, and what type of food, what type of lifestyle she is following, and how we have to heal the root cause. So I am coming back to the same point. इसको healing, इसके अल्सर्स को हील कैसा करे? डाइजेस्टिव कैनाल आपके माउथ से लेके एनल कैनाल तक होती है. आई एम सेइंग सिर्फ स्टमक नहीं, पूरे माउथ से लेके एनल कैनाल तक जो भी है, Ayurvedic herbs are scientifically proven to improve your mucosal barrier. So we have to work on that. Okay. So मैम एक बार आप हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके प्लान को अच्छे से हेल्प कर देंगे. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो अगला क्वेश्चन वो भी सुरेंद्र जी से, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. एज 60 है उनको भी बैड गट है, लॉन्ग टाइम से एसिडिटी, ब्लोटिंग है, कभी कभी फाउल टेस्ट भी आता है. उनको भी 1 साल पहले H. pylori का इन्फेक्शन हुआ था, उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली थी एंड जब उन्होंने एंडोस्कोपी की थी तब भी इन्फेक्शन का पता चला था. तो अभी एट दिस एज वो क्या कर सकते हैं?
ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेरी। ये यही है कि आप जब भी यू हैव समथिंग, द आमा, द अनडाइजेस्टेड पार्ट इन योर गट, you will have foul smelling. So bad breath is one of the signs wherein you are having some issues in the gut. First thing. Second is, it also it is also related that आपके digestive enzymes कहीं पे hampered है, जिसके कारण it is not, the release is not proper, and that's why you are not having a proper digestion. So we have to, we should be taking this patient for a gut test. It should gut test leke I have to just see the root cause from where it is coming. H pylori is one of the root causes. It is not the root cause. Okay, so that is there. Issues पहले से ही होते हैं. H pylori होने के बाद that is very much triggered and issues trigger होके सामने आते हैं. So that is the symptomatic stage when a patient gets symptoms. वो internal imbalances already होते हैं. H pylori just becomes an एक चीज का वो हो जाता है कि H pylori हुआ and then the symptoms are, the flaring up of symptoms will be there. So we have to just look into the gut test and we have to work accordingly. ओके, थैंक यू डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, रोशन जी ने पूछा है कि उनको ऑलवेज कॉन्स्टिपेशन की इश्यू रहती है, तो हाउ वी कैन ही मूव फॉरवर्ड विद मूल हेल्थ? ओके, कॉन्स्टिपेशन का इशू क्यों हो रहा है, वी शुड बी गेटिंग a reason of it. Maybe ऐसा हो सकता है कि his gut motility is not proper. How constipation is related? First is we are seeing the frequency. How many times a day he is going? Is he feeling satisfied? Because whenever a patient feels satisfied, that means his 60 to 70% of the waste material is thrown out. बाकी की चीजें फिर भी अंदर होती है. Also, we should be seeing the nature of the stool, कि hard है, dry है. That way we are going to the root cause wherein lining कितना अच्छा है, bacterial load कितना अच्छा है. So taking the gut test and seeing that root causes will surely will be able to diagnose it. Functional constipation है, mechanical constipation है, and किस दोष के वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है फ्रॉम आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू. यानी अगर वात दोष के वजह से हुआ है, पित्त के वजह से हुआ है, व्हाट इज द दोषिक डोमिनेंस एंड हाउ वी हैव टू रिलीज दिस, हाउ वी हैव टू मूव योर गट, हाउ वी हैव टू improve the lining so that stool formation becomes better. We have to work on that. Okay, थैंक यू डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम सौरभ जी। ही सेड एज 40, उनको IBS सी है, सिबो है, डिसबायोसिस है, एक्सेसिव बोर्पिंग है, ब्लोटिंग इशू है जो थ्रू आउट द डे रहती है, इसके साथ साथ इंडाइजेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 25 kg लूज किया इन लास्ट 7 years. तो हाउ वी कैन ट्रीट? उनको मोटिलिटी का भी इशू है, तो हाउ वी कैन ट्रीट द मोटिलिटी? See, motility, I'll surely go back to a dosha wherein vayu plays into picture, because आप अगर सोचो ना, वायु इज फॉर योर मूवमेंट्स. सो जो ये मूवमेंट्स रेगुलराइज करता है, दिस इज वन ऑफ द वायुज विच इज सिचुएटेड अराउंड योर अम्बिलिकल रीजन, जहाँ से वी हैव टू वर्क. अगर वो वायु का हमने द फिजियोलॉजी ठीक किया, वायु का फिजियोलॉजी इज व्हाट इट शुड बी मूविंग प्रॉपरली. सो अगर ये हमने ठीक किया, सो वी आर वेरी गुड टू गो. सिंपल होता है, कभी कभी 20-30 साल से सेम चीजों से है, बट रूट कॉज फाइंड करने में मे बी वो डायग्नोसिस कहीं पे रॉन्ग हो जाता है. फ्रॉम व्हाट इट इज कमिंग, वी हैव टू सी दैट, एंड देन वी कैन श्योरली वर्क ऑन. ऑल्सो whenever I talk about vayu ka excess movement, excess your tube is moving, you will have diarrhea. Whenever your vayu is not moving properly in the colons, you will have constipation. So it is that simple. But going to root always. Yeah. तो सर प्लीज एक बार हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर लीजिएगा, हम आपके हिस्ट्री को डिटेल में देखेंगे कि क्या है, वो हिसाब से हम आपको मदद कर देंगे. तो प्लीज वेबिनार के बाद आप एक बार हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर लीजिएगा.
मूविंग फॉरवर्ड देव जी हैव आस्क्ड कि वो 28 इयर्स ओल्ड है, उनको माइल्ड एब्डोमिनल पेन होता है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ जब भी वो मील खाते हैं उसके बाद। उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, सोनोग्राफी करवाई, बट द रिपोर्ट इज नॉर्मल। डॉक्टर ने बताया कि इट इज ड्यू टू सम इन्फेक्शन, तो वो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो भी वो जब भी मील खा रहे हैं उसके बाद उनको पेन हो रहा है। So meat, your Ayurveda also says that your mamsa rasa is very heavy for your digestion. Okay, so whenever you are having meat, first thing, at what time of the day are you having meat? Doctor, it's not, Second is he's just talking simple meals. जब भी वो meals खाते हैं, like lunch, meals. breakfast Okay, खाने I के बाद ऐसा। my bad. Okay, meals. So postprandial fullness या postprandial pain जो है, खाना खाने के बाद पेट भारी भारी रहना, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना, दर्द is one of the signs wherein you have some vayu imbalance there. सो फर्स्ट इज आप खाना खा रहे हो, आपका खाना 70% पच रहा है, बट वो जो 30% रह रहा है, 30% विल गिव यू दैट फर्मेंटेशन, जिसके कारण गैस होता है। गैस जहां पे भी कहीं पे आपके एब्डोमेन में होगा, यू विल हैव पेन फॉर श्योर, बिकॉज गैस का कैरेक्टरिस्टिक ही है। आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल आएगी, आपकी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एवरीथिंग विल कम नॉर्मल। मे बी आपको कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, इट इज सिंपल गैस विच वी हैव टू वर्क ऑन। अगर हमने वो चीज ठीक कर लिया, you will not have pain. And I have seen patients in which हम simple medicines देते हैं and they are completely getting better with that. Pure Ayurvedic medicines only. So Yeah. take the gut test. I'll be knowing it, Yeah. how to work on. ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे जो बाकी कस्टमर्स है, विश्वकर्मा जी, सौरभ, लाइक मोस्ट ऑफ देम आई हैव सेड कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है एंड लाइक कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी रहता है, तो हाउ डज रियली कॉन्स्टिपेशन अफेक्ट्स ऑल ऑफ दिस एंड हाउ वी रियली डू ट्रीट इट? करेक्ट। सो बोथ द वेज, whenever आपको स्ट्रेस होता है, योर cortisol levels are hampered, your brain is not properly communicating with your gut. So बहुत बार dual therapy काम करता है इसमें। One is we are treating constipation as a whole, and second is we are treating your brain and gut axis so that your brain is properly communicating with your gut and your gut movements are proper, and also there will not be any negative feedback from your gut to the brain. That sort of, ये दोनों एक दूसरे से connected है. So simply working on your gut or maybe simply working on just the brain so that अगर दिमाग से निकल गया तो constipation नहीं, constipation है थोड़ा बहुत, आपके stress के कारण, आपके brain के miscommunication के कारण उसको trigger हो रहा है, वो ज्यादा increase हो रहा है. So दोनों पे work करना is a thing. Also, we have this particular question in the gut test wherein we say stress कितना है, mild है, moderate है, it is fine. अगर high है, if your sleep is because your gut clock, acid clock and sleep cycle एक दूसरे से बहुत connected है. So अगर हम ये दोनों चीजों को एक साथ ठीक करें तो ही we will get a good positive result. Okay, thank you doctor. Moving forward, हमारा अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम नृत्यास जी। ही सेड उनको आईबीडी है, क्रॉनिक बस था, बट देयर अभी उनका इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको ब्लोटिंग, एसिडिटी है एंड ही इज टेकिंग ट्रिफला व्हिच इज हेल्पिंग, बट स्टिल देयर इज सम एसिडिटी। Okay, so very very nice question. Triphala is wonderful healer. आपके गट को वो कंप्लीट हील करता है. त्रिफला इज रसायन, सो इट रिजुविनेट्स योर गट. बट त्रिफला इन व्हाट फॉर्म यू आर यूजिंग इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज you already have an infection, you already have an inflammation. So अभी लाइनिंग ठीक नहीं है, एंड इफ यू आर वर्किंग समथिंग विथ चूर्णा बेस्ड फॉर्मुलेशन तो वो ठीक नहीं होगा. You can work with syrup based formulation of Triphala, or you can also go for tablets of Triphala. So this comes into picture. आप कहाँ से आयुर्वेदा में it's a scam right now. आप कहाँ से मेडिसिन ले रहे हो, वो प्लांट कहाँ पे ग्रो किया है, how your tablet is made out of it, वो
चीजें बहुत डिपेंडेंट करता है, हाउ प्योर इट इज, दवाई कितना प्योर है ये बहुत इम्पोर्टेंट। कोई आयुर्वेदा का स्टिकर लगा के इफ समथिंग समथिंग रॉन्ग इज, त्रिफला सिंपल कॉम्बिनेशन है जहाँ पे चीजें डिफरेंट भी होती है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट, बट बेटर कि ऑलवेज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड प्लान आप लो, ना कि लोकल चीजों पे भरोसा रखो विच आर आयुर्वेदिक बट नॉट एग्जैक्टली आयुर्वेदिक। Yes, So yes, definitely. बिल्कुल सही बताया डॉक्टर आपने। So sir, please get connected with the hair coaches. They will help you in detail because वेबिनार में डॉक्टर आपको एक ओवरव्यू दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकती है, बट जब आप हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट करते हो वो आपकी हिस्ट्री का एकदम डिटेल में देखते हैं एंड उस बेसिस पे आपको मदद करते हैं ताकि आपकी ये जो गट इशू है वो हम आपको एकदम से हील करने में मदद कर सके। So please after the webinar get connected with the hair coaches and will definite gut experts and will definitely help you out. मूविंग फॉरवर्ड, अमित जी ने बताया कि उनको 5 साल से पेट की प्रॉब्लम है। 5 साल पहले कुछ इश्यूज की वजह से उनको स्ट्रेस लेने में लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है एंड तभी से उनको प्रॉब्लम शुरू हुई है। उनका 12 kg वेट लॉस भी हो गया है एंड कभी कभी ऊपर हल्का हल्का दर्द भी होता है, पेट में जलन सी रहती है। उनकी एज 39 है। Okay. See, weight loss is a very common symptom in gut issues, जहाँ पे हमें चीजों को देखना है कि इज इट इंटेंशनल, आप डाइट फॉलो कर रहे थे, आप लाइफस्टाइल ऐसी बना रहे थे, आप वर्कआउट कर रहे थे जिसके कारण वेट लॉस हुआ है, या ये रियल वेट लॉस है विद इन 3 months जो ड्रास्टिक है। ओके, अदर पैरामीटर्स भी है जो हमें क्लिनिकली देखने पड़ते हैं इसमें। We should be doing some investigations. Also, how Mool helps in this is, मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रेजुअल वेट लॉस या सडन वेट लॉस, इसमें हमें डिफरेंस करना चाहिए पहली बात। एंड वेट गेन या वेट लॉस दोनों कंडीशंस में योर गट इज वेरी मच इन्वॉल्व। सो जब भी एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, who is going to nourish your muscles, who is going to work on your weight? It is your gut, nothing else. So इसको हम strengthen करेंगे। Also many are patient I have seen in the clinical practice जहाँ पे वो आके बोलते हैं मैडम वेट बढ़ाना है तो मैं सिर्फ न्यूट्रिशनल डाइट दूंगी, आपको कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दूंगी, वो काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप गट से नहीं यूटिलाइज होता है ना चीजें। सो आप गट को पहले ठीक करो। ऑल्सो इन मूल वी टेल देम कि 3 महीना वी हैव टू वर्क ऑन योर गट हेल्थ, उसको कंप्लीटली हील होने दो, उसको टाइम दो, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स व्हिच विल वर्क वंडरफुली। सो वी हैव टू look into this picture. Yes. Let him come to Mool. Yeah. We'll see. थैंक यू डॉक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, नेहा जी ने पूछा है ये क्वेश्चन कि जब भी वो ट्रैवल करते हैं उनका गट बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाता है एंड देयर इज एक्सेसिव बोपिंग एंड एनी लाइक व्हाई इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस? एंड सेकेंडली जब उनका ल्यूटल फेज चलता है तब उनको एक्सट्रीम ब्लोटिंग, हेडेक, नौशिया फीलिंग होती है, तो इसको कैसे कम कर सकते हैं हम? See, right now, for your luteal phase and your bloating, it is very much connected because in Ayurveda, हम उसको differently नहीं देखते। We work on that Apana Vayu only. Apana Vayu regulates your urination, regulates your stools, regulates your evacuation, as well as it regulates your period flow. Also जो भी hormonal pictures है, it is related to your gut कि how your gut is releasing that hormones. That's why very much common in females जहाँ पे bloating ज्यादा लगती है या जैसे the menstrual phase goes on, आपको ये सब चीजें ज्यादा लगती है। So we have to always, and also for a period related pain also I have given medicines on gut health and it worked wonderfully on your period pain as well. So these are connected. I'll come back to the second part wherein she is asking about traveling. This is a very subjective feeling. Maybe traveling ke time pe your climate is changed, your water is changed, that could impact your gut. And also she is having I'll diagnose this as a very sensitive gut, and also the Pittach type wherein it is hypersensitive. Whatever we have, whatever, are you traveling somewhere, gut remembers everything. Gut is having a very good memory. So ये ऐसा भी होता है कि हमारे इसमें चीज होती है कि मैं ट्रैवल करूंगी, 2 बार हो गया ना तो थर्ड टाइम our brain starts working that
ट्रैवलिंग करूंगी और प्रॉब्लम हो जाएगा. So we have to counsel. We have to just work into this thing. एक consultation के बाद. Yes, Let yes, her come. definitely. So, ma'am, please get connected with our gut expert and we'll help you out. So, अगला question is from Saurabh ji. He has said कि what about the rectal itching जो होता है, dry intestine, and he have also mentioned कि उनको है ना वो घी नहीं ले सकते क्योंकि उनको lactose intolerance है. Come back again, Prathana. So, घी नहीं ले सकते. I got it. he have mentioned कि उनको rectal itching हो रही है, dry intestine जैसा भी है, and he cannot take घी क्योंकि उनको lactose intolerance है. Okay. If he cannot take ghee, we also have other supplements which are working on that. We also have other treatment modalities wherein sits bath comes, because gut issues will have, because mole is dealing with anorectal cases. Gut issues जिनको भी है उनको रेक्टल एरिया में हम जहाँ से मोशन पास करते हैं वो एरिया में प्रॉब्लम होना, इचिंग होना, बर्निंग होना, कभी कभी ब्लीडिंग होना, कट रहना, ये बहुत कॉमन है. एंड इफ हम कुछ इंटरनल चीजें दे, जैसे घी इज अ वेरी गुड हीलर, वो ले सकते हैं. बट इफ ही इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, वी हैव अदर टाइप्स ऑफ मेडिकेटेड घीज जो हम ट्राई कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव a good formulation, castor oil based formulation, which can work, because castor oil is a very good healer, so it can work in his case. That's way that in this way we can plan a kit. But also there should be a consultation done, because we have other medicines which work on itching. But again, consultation will be needed for that. Yes. Yes, definitely, sir. So please get connected with our gut experts and we'll help you out. So, doctor, before we end the webinar, एक छोटा सा overview जो आप हमारे सारे customers को देना चाहोगे, that why it is so important to work on your gut and how really how Mool helps you. So, a small summary of this whole webinar that would be really helpful for them. Okay, so I'll come back to a very simple point why we have we have started Mool Health. Is fixing the root is always important, because you have seen cases in which people are taking n number of supplements, whether it is allopathy, homeopathy or Ayurvedic, but they are not getting results. Why? Because sometimes diagnosis is not proper. Why disease is coming, we are not going into the deeper problems. We are just handling it superficially, which is not right. Okay, so that is there. Second important thing is, I'll always tell my patients that for any metabolic disorder, 3 pillars are there: your medicine, your diet, your lifestyle. Okay, so if we are combining these 3, we will surely see a good impact, good positive result. Third important thing is your kit, your diet, your lifestyle should be personalized. Unique है, unique चीज है. आपकी प्रकृति कैसी है, मेरी प्रकृति में भी मुझे एसिड डिफरेंट रीजंस की वजह से हो रहा है, आपको डिफरेंट वजह से हो रहा है. सो ऑल्सो मेरा एज डिफरेंट है, आपका डिफरेंट. सो कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन सच केसेस. Whenever we have to heal it completely. So let's not talk about disease, let's talk about the pattern, digestive pattern, which we have to work on to be settled for life. So my motive, I always tell in my first consultation, my motive is always let's take medicines for 3 to 6 months and we'll be without any medicines after the course. So that is the motive. Yes, definitely, doctor. It's a very true thing कि हमें अंदर से आपको root cause को heal करना है. So thank you, doctor, so much for joining us today, sharing your time and expertise with our customers and guiding them in their journey. It really means a lot. Thank you so much for joining us. Thank you, Prathana. It was a wonderful session. Thanks. Yeah. So मैं हमारे सारे कस्टमर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एज वी नो कि
कि वीकेंड है फिर भी आप ज्वाइन हुए, एंड आई होप आपको एक आइडिया मिल चुका है कि हाउ रियली मूल हेल्थ वर्क्स यू। सो आप प्लीज हमारे गट एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिएगा, वो आपके रूट कॉज को डिटेल में समझेंगे, आपको डिटेल में गाइड कर देंगे कि आपकी पूरी जर्नी कैसी रहेगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। उसके साथ साथ आपको डाइट प्लान भी मिल जाता है। सो प्लीज गेट कनेक्टेड विद द गट एक्सपर्ट्स एंड दे विल हेल्प यू आउट। टिल दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गट जर्नी, एंड जितनी जल्दी हो सके आप अपने गट जर्नी शुरू कीजिए। टिल दैट ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन।